Hello friends, my today's topic is knowing our numbers, grade 6 chapter number 1. So whenever we talk about the numbers, we should know the concept of digit, numeral and number. Okay, so let us start. My first question is how many zeros or you can say dots you can see over here. So we can count here 1, 2, 3, 4, 5. So my answer is 5. What is this 5? 5 is known as digit. Okay. So how can we define digit? Digit is a single symbol that is used to make numerals. So digit is a single symbol, single means single number, which is used to make numeral. Okay. So here in maths we have 0 to 9, 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the 10 basic digits. We can use these digits and create infinite numbers. Now next box you can see that numeral. Okay. So take one example. Suppose 7. You can say 74. You can say 169. So what is it actually? This is a single digit. Now this is the combination of 2 digits. This is the combination of 3 digits. So we can say that numeral is also a symbol which stands for a single digit or a group of digits. Once again, numeral is a symbol which stands for a single digit or a group of digits. So when we write 2 digits together, 3 digits together or more than 3 digits together, that becomes a numeral, that is known as a numeral. Now the next one is number. Next here you can see that number. What do you mean by number? So number is just an idea how to write it. Okay. For example, this 5. Suppose I am asking how many zeros are there. So different persons can give different answer. Suppose one is writing this one. Another one is writing with the spelling. Another person just can show the fingers so I can understand yes 5. Okay. So using fingers also we can represent the number. Someone can say 1, 2, 3, 4 and 5th is the slanting one, that is known as telemarking. So this is also the way to denote how many dots are there. Someone can tap 1, 2. Once again count how many times. So by tapping also we can represent. So this is just an idea. Number is just an idea how to represent. Okay. So this is the basic thing with digit, with numeral and with number. So we can say that number is an idea, numeral is how to write and single digit is a single symbol to represent any of the data. Okay. So now same thing I can explain you with different examples. Here you can say that 1, 2, 3. These are the 3 different digits. If you will write together, this will become 123. So 123 is known as numeral and this is just an idea. 123 means 100 plus 20 plus 3. So 100 plus 2 tens plus 3 ones. So this is an idea about the number. Now if we will talk about the English, we can say that D, O and G, these are the 3 different letters. If letters we write together, this will become dog. And dog, we know this is the idea. You can see that the picture is of dog. So everybody knows dog. Just an idea in mind what is dog. Take another example, C, A, T. These are the 3 different letters. If 3 letters we will write together, this will become cat. So again, cat is an idea in our mind. Someone can draw like this, someone can draw like this, someone can draw like this. But this is the idea that cat is looking like this one. Or without
writing anything, if I will ask you which animal is it, everybody can give answer. This is the picture of a cat. Similarly, this figure represents which animal? So we can say that yes, this is the picture of a dog. So this is the way I have explained you about the digit. Digit is a single symbol. We use this digit to make the numeral. What is numeral? Numeral is again a symbol which stands for a single digit or group of digits. It may be 2, it may be 3, it may be 4, it may be 5, it may be infinite. So this is known as numeral. And number is just an idea how to represent that number, and these are the different ways to represent. I have written here only 5 ways, but there are more than 5 ways. Someone can do tapping with the finger, they can click the fingers, they can tap their feet, they can tap with any pointer. So these are the different ways to represent the number. So this is the basic idea about the number. So after completing this, we can see that digits make up the numerals, and numerals stand for just an idea, and that is known as number. And one more thing I have written over here, numeration. What is the meaning of numeration? Whenever we write in words, that is known as numeral. For example, this is TEN, 10. 10 represent for this number. So this 10 is known as numeration, and this 10 is known as a numeral because this is a group of digits. After that, you can see that I have made here 2 legs of a dog. Instead of 4 here, you can see only 2-dimensional. So I have made 2 legs. So one is for Indian number system, one is for international number system, and the third one is Roman number system that we are going to study in this chapter. One more thing, in textbooks you can see that always number system, but it should be actually numeral system. Indian numeral system, international numeral system, and Roman numeral system. Why I am not asking about the number system? Because number system is totally different. If we talk about the number system, we get natural number system, whole number system, integers, then rational numbers, irrational numbers, real numbers, imaginary numbers. This comes under number system. That's what we should not write this Indian number system. The correct way of saying and writing is Indian numeral system, international numeral system, Roman numeral system. Okay, let me clear this, and I have some interesting fact about the numbers. Any one of you can imagine what interesting fact with the numbers? Okay, so here I have one chart for you. So here you can see that some interesting facts about numbers. So Indian number system or Arabic numeral system, initially we used to write down numbers this way, and here you can see that 1 and here 1 angle. So number 1 has 1 angle. This is number 2. So in number 2 you can see that we have 2 angles. Number 3, 1, 2 and 3 angles. Number 4, 1, 2, 3 and 4. Number 5, 1, 2, 3, 4, 5 angles. Number 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 angles. Similarly, number 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Number 7 has 7 angles. 8, we have 8 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and these are 2 exterior angles. 6 plus 2, 8 angles. Number 9, we have 9 angles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. And what about 0? 0 doesn't have any angle, so 0 have 0 angles. So we can say that numbers are, or naming is done for this digits based upon the angles. Whatever number is there, that many angles you can find out in the number. So this is the Hindu Arabic number we used to write initially, and now we have changed the way of writing.
Now with the help of this, I want to tell you one more story. You must have heard this story, you must have watched, you must have read this story in WhatsApp, but it's very interesting story. So the story is about the numbers. I'll tell you story in Hindi so that everybody can enjoy this. So एक बार 0 to 9 ये जो 10 डिजिट्स हैं ये आपस में खेल रहे होते हैं. ये प्लेग्राउंड है उनके लिए. यहाँ वहाँ ये नंबर्स खेल रहे हैं. अचानक नंबर 9 को रियलाइज होता है, ओहो मैं तो सबसे बड़ा हूँ, मैं तो सबसे सीनियर नंबर हूँ, तो मैं अपने से छोटों को डोमिनेट कर सकता हूँ, मैं अपने से छोटों को से कुछ भी काम करा सकता हूँ. तो अचानक नंबर 9 को रियलाइज हुआ. तो नंबर 9 ने क्या किया, अपने से छोटे नंबर 8 को एक छोटी सी लगा दी मस्ती मस्ती में. 8 को बहुत बुरा लगा. फिर 8 ने सोचा कि मेरे से भी तो छोटे नंबर है. हर जैसा हमारे साथ होता है सेम वही हम दूसरों के साथ करने की कोशिश करते हैं. तो इस 8 ने क्या किया, 7 को एक स्लैप किया. 7 ने 6 के साथ वही किया. 6 ने 5 के साथ, 5 ने 4 के साथ, 4 ने 3 के साथ, 3 ने 2 के साथ सेम वही किया. क्योंकि सबको बुरा लग रहा था और सबको लग रहा था कि हम हमारा फ्रस्ट्रेशन किसी तरह निकाले, और हर किसी ने अपने छोटे के साथ वही व्यवहार किया जो कि बड़े ने किया था. अब बारी आई नंबर 1 की. तो नंबर 1 ने क्या करना चाहिए, नंबर 1 से जो छोटा होता है वो होता है 0. नंबर 1 ने 0 को एक स्लैप देना चाहिए, बट 1 ने ऐसा नहीं किया. 1 ने क्या किया, वो खुद तो खड़ा रहा बट साथ में 0 को उसने अपने बाजू में खड़ा कर लिया. तो अब ये जो नंबर बन गया वो बन गया 10, और ये जो नंबर 10 है इन सभी नंबर्स से बड़ा हो गया. स्टोरी बहुत छोटी सी है, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी, 0 कितना भी छोटा क्यों ना हो, बट वो किसी भी नंबर के यदि राइट हैंड साइड में लग जाता है तो उस नंबर की वैल्यू बढ़ा देता है. तो 0 की वैल्यू कुछ ना होने के बाद भी वो नंबर की वैल्यू बढ़ाता है. दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि कोई भी छोटे से छोटा भी यदि हम उसे अपने साथ मिला लेते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारी ताकत बढ़ जाती है. तो यूनिटी क्रिएट करने के लिए हमें जरूरी है कि हर किसी को अपने साथ ऐड करना है, भले वो उम्र में हमसे कितना ही छोटा क्यों न हो, लेकिन उसे हमें अपने साथ मिलकर काम करते जाना है. दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये डोमिनेट करते जा रहे थे अपने से छोटों को, तो हमें ये सीखना चाहिए कि हमें से अपने छोटों को डोमिनेट नहीं करना चाहिए. वो छोटा है बट बहुत काम का है, कहीं ना कहीं वो छोटा भी हमारे काम आएगा. तो ये जो डोमिनेट करने का जो नंबर 9 ने जो सिलसिला शुरू किया था, ये कहीं ना कहीं गलत साबित होता है. और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी किसी के को डोमिनेट नहीं करना चाहिए. हमसे छोटा है तब भी प्यार से हमेशा अपने साथ लेकर चलना चाहिए. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये स्टोरी हमेशा याद रखेंगे और इसका यूज आप क्लासरूम में करेंगे, क्योंकि क्लासरूम में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स होते हैं. कई बार हम नोइंगली अननोइंगली अपने ही फ्रेंड्स को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो आइंदा से आप कभी भी ऐसा करें तो ये स्टोरी आपको याद आए और उस नंबर 0 को, उस नेग्लेक्टेड पर्सन को हमेशा अपने साथ मिलाइए. आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी. यदि उसका कोई सब्जेक्ट वीक है, आप उसकी हेल्प कीजिए, आप उससे प्रैक्टिस करवाइए, वो आपकी तारीफ करेगा. और उसकी जब प्रैक्टिस कराते हैं तो आपका नॉलेज लेवल भी इंक्रीज करता है, आपकी अपनी भी प्रैक्टिस होती है. तो जब कभी इस तरह के किस्से आपके सामने आए तो आप स्टोरी को याद करिए और हमेशा दूसरों की हेल्प करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो.